Very good morning and hello students. I hope you all are doing good. Today we will be learning English poem of your textbook. That is lesson 2, Everything That's Nicest. Students, this poem is about a girl who used to keep all her toys in unmannered way. She is assuming that she lives in a topsy-turvy town, place where all must not will be must, so she will be the happiest person. But her granny tells her that you should keep all your stuffs in a proper place and a well-mannered way. So students, now we will come to the reading part of this poem. Everything that's nice, as Granny says. It's wrong if you put your toys back where they don't belong. Slide along the landing, climb a tree or two. It's sure to be the very thing that children oughtn't to do. I wish there was a place where things were upside down. Must not will be must in topsy-turvy town. Then I suppose that I'd be topsy-turvy too, and only want to do the things that children ought to do. This poem was written by Anonymous. Now students, the reading part of this poem is finished. Now we will come to the explanation portion. So student, the poem Everything That's Nicest tells us that children, we love and enjoy doing so many things while playing, such as sliding down the railings, going upside down, playing with the toys, and spreading them all over, and many more things that we do while playing is something that is not right according to our elders. In this poem, we learn that the same things we can see how a grandmother corrects her granddaughter for the things she must not do, which the granddaughter feels that those are the things that she loves to do while playing, and thinks that those are the things that she loves to do playing, and thinking that she was allowed to do all the mischiefs like other children usually do, and she thinks that she is doing all things are right, and she is also dreaming that there was a dream world which is called as a topsy-turvy town. So in that town, she will allow to do all the mischiefs what she wants to do, that all things will be allowed, so she will be the happiest person of this world. So students, as you have seen that the girl liked to do all the things what her granny was telling her not to do. So students, this is the poem. Now students, we will come to a short Hindi summary what we have learned today. बच्चों, जिस तरह से आप सबको भी अपने मन का करना पसंद होता है, जैसे कि आपको ऑल टाइम खेलना पसंद है, इधर उधर घूमना पसंद है, ट्रीज पे चढ़ना पसंद है, और आप सबको स्टडीज अच्छी नहीं लगती, उसी तरह बच्चों जो ये पोम है स्टूडेंट्स, इन दिस पोम क्या होता है कि एक गर्ल है, वह हमेशा चाहती कि वह अपनी मर्जी की चीजें करे। वह ड्रीम करती है कि काश एक ऐसा वर्ल्ड होता जहाँ पर हर चीजें उसके अकॉर्डिंग होती, जहाँ उसे कोई नहीं रोकता, क्योंकि इस वर्ल्ड में तो ग्रैनी उसे हर चीज के लिए रोकती है, जैसे रेलिंग से फिसलने के लिए, ट्रीज पे चढ़ने के लिए, टॉयज को इधर उधर रखने के लिए,
ज्ञानी उससे बोलती है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, इट इज नॉट गुड फॉर यू, बिकॉज हो सकता है यही चीजें आपके लिए हार्मफुल हो। स्टूडेंट्स, आई नो दैट कि आप सबको भी ये सब करना पसंद है, बट स्टूडेंट्स हर चीजें ऐसा नहीं होता कि हर चीज जो आपको पसंद हो आपके लिए सही हो सकता है वो चीजें आपके लिए ही खराब हो या नुकसानदायक हो। सो स्टूडेंट्स, यही है कि आपको हमेशा अपने एल्डर्स की बात माननी चाहिए। हो सकता है जैसे कि आज आपके मदर फादर आपको बोलते हैं कि यू शुड स्टडी, आपको स्टडी करनी चाहिए, बट आप लोग क्या करते हो, उसे इग्नोर करते हो। बट स्टूडेंट्स, वो आपके फ्यूचर के लिए ये सब चीजें बोल रहे हैं कि आप ये सब चीजें करोगे तो आगे जाके एक अच्छा इंसान बन पाओगे। जैसे कि आज आपको कुछ आइसक्रीम खरीदनी होती तो आपको आपके जो मनी होता है आपके मदर या फादर से बोरो करना पड़ता है। जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको आइसक्रीम खरीदनी होगी, तब आप क्या करोगे, तब आपको खुद आपके पास मनी होना चाहिए। तो उसी के लिए आपको जब आप स्टडीज करोगे, अच्छे जॉब पे लगोगे, तभी तो जाकर आपके पास मनी होगा, और मनी होगा तब आप जाके हर चीज को बाय अप कर पाओगे। सो स्टूडेंट, इसी तरह से बहुत सारी चीजें हमारे एल्डर्स बोलते हैं कि हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चीजें वन वे या अनदर वे में हमारे लिए खराब हो सकती है। क्योंकि हमारे जो बड़े होते हैं उन्हें हमसे ज्यादा पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है, और हमें हर चीजों को कैसे यूज करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्या चीजें हमारे लिए हार्मफुल हो सकती है अगर हम ये चीजें करेंगे। सो स्टूडेंट, दिस इज द हिंदी समरी ऑफ दिस पोएम। Students, this poem is a very good poem. Students, it gives a good moral. So the moral of this poem is, it teaches us that we have to listen to our elders and to be in organized and as well as mannered way. We have to be in good mannered way. We have to put our things at the place where they belongs. We have to obey our elders. Everything we have to do according to our elders, because they are right for us. Now students, we will come to the hard words of this poem. Landing, the railing of the stairway that leads to the hall downstairs. Second, topsy-turvy, upside down ought to be in this order. Third, suppose, to, assume. Now students, this poem is finished. So students, if there is any query or doubt related to this poem, you can ask me anytime.